and how to take recordings of the readings from the test. Similarly, we covered the related theory in our previous lectures as well in the last week. The schematic illustration of the constant head permeability test that is suitable for coarse grained soils, granular soils, sand gravels, and particle size larger than them, which offer no cohesion. So we use an overhead reservoir that is large enough to maintain its head. There is a sample of known diameter and length with a maintained constant head. We allow the water to seep through, and once the steady state conditions are maintained, we note down the Q value and the head causing flow. And we use Darcy's law to determine the permeability of the sample. So you've seen that in the recording. Most important thing is how to calculate, how to actually go for calculations. Sir Amar will be sharing some raw data with you related to both tests. So you have to come up with this table. And you can see that 3 tests have been performed here. Their time has been noted. The observations in red color are those which you need to make every time. When you are performing a test, you need to take these readings every time. So you must know what is the head causing flow from the reservoir and what is the head level in the specimen when the effluent is coming out, when the seepage is occurring, when the water is flowing. The difference of the head is reported. डाटा मैंने वो जी शेयर कर दिया ग्रुप में, ये टीम्स वाले जो चैट में है, मतलब फाइल्स में है इधर. वंडरफुल, बिल्कुल ठीक. Before, prior to the test, because the sampler is the same that you're going to use for 3 tests. So you determine the diameter of the permeameter. Permeameter is simply that sampler within which the soil is placed. Area is determined by pi by 4d square. Length of the specimen you note down by taking multiple readings around the specimen and then taking the average. And the volume comes out to be the area multiplied with the length of the sample. Dry density of the soil can be simply determined by knowing the moisture content, knowing the weight of the soil, and knowing the volume of the mold that you're using. So with that, you can determine the dry density of the soil. During the tests, you note down the H1, which is the, if I just take this picture, I simply paste it over here. So now this will make more sense. So H1 is the reservoir level over here. That is this level from a fixed datum. Generally, the tabletop is considered to be the fixed datum, or the bottom of the sample is considered as a datum. H2 is simply the level of the reservoir, level of the water in the specimen, and the difference comes out to be H, which is H1 minus H2. Time you note down using a stopwatch while you collect a known quantity of water. So for 60 minutes, how much water we could collect, we have mentioned it over here. With that, you determine volume per unit time, that is discharge, as you can see over here. You note down temperature having the thermometer with you, and then finally you apply correction if the temperature is other than 20 degrees Celsius. So these days we expect higher temperatures, so the permeability would be slightly higher. Permeability reported would be slightly higher, and you need to apply a correction to reduce it to 20 degrees Celsius. However, when you perform this test in the winter, it is expected that the noted permeability may be small, while the actual permeability at 20 degrees Celsius may be relatively higher. So you need to apply still a correction. You come up with a close to accurate or correct value of the permeability. Is this clear?
तो ये आपकी रिपोर्ट होगी, रिजल्ट जो है ये आपके, आपने इन रिजल्ट्स को इस तरह के टेबुलर फॉर्म में रिपोर्ट करना है बाय कैलकुलेशंस. This table is again available in your slides. You can make use of this table. So this is a simple relationship between viscosity of the water and then the temperature. So if the viscosity of the water is known to you, then you can simply use this table corresponding to the temperature that was there in the laboratory. So it turns out to be maybe 30 degrees Celsius, then this is your for zero viscosity. So if you know, for example, your viscosity is 0.6, then in that case, this is the correction factor that you need to use at 30 degrees Celsius. So you can read this table, you can apply the correction. Now moving towards the falling head permeability test, which is a variable head permeability test and is suitable for fine grained soils, and we generally use it for silts and clays, or even sometimes minerals also. So we make a specimen again the same way we made a specimen in our constant head permeability test. This time there is no reservoir. Instead, there is actually a standpipe, as you can see over here. This is a standpipe. And the standpipe is connected with the sample. The flow is allowed to cross through the soil. And why we perform this in a way that the flow is actually enters from the bottom and leaves from the top is to avoid the air bubbles. This way, the water can take the air bubbles with it, and once the steady state conditions are achieved, so you just wait for this head drop, which is causing the flow. Once it drops significantly, for example, the initial reading is 70 centimeter or 7.7 centimeter, and the final value is say 1.55 centimeter. This is called a considerable drop, notable drop. So it's not like 1 or 2 centimeters. It should be 10, 15, 20 centimeter of the drop. So it may sometime take up to 5 minutes in the laboratory. Or if you're dealing with minerals, that may actually take up to several thousand of the minutes. Maybe for example, this may be the case, or maybe sometime days, 2 weeks to get a very. So it depends upon the soil type. Now, once you get that, you must note down H1, which was the initial head, or the H0, the initial head, and you note down the H2 or H1, which is the final head, and you take their differences and their log as well. So area of the sampler again is determined the same way. So this is your observation and calculation table. As you can see again, on top of the table, you have got the similar observations that you made for constant head permeability test: diameter, length, area, volume. Diameter of the standpipe should be known to you. And then the area of the standpipe is simply pi by 4 p square. Finally, you may wish to report the density also, because it is very important. Your permeability is a direct function of the density. So it directly affects your permeability. If you do not report this, maybe same soil when compacted at say 1.4 gram per cc may offer you slightly higher permeability. When it is compacted more, the permeability is expectedly reduced. Can somebody tell me why? What do you think the permeability? सर उसके अंदर वाइड्स कम हो जाएंगे ना जब उसकी उसे हम मतलब कंपैक्ट कर देंगे. बिल्कुल सही, वेरी गुड. तो क्या ख्याल है कि कौन सी परमेबिलिटी को ज्यादा होना चाहिए? 1.7 ग्राम पर सीसी वाली को ज्यादा होना चाहिए, 1.4 ग्राम पर सीसी वाली को ज्यादा होना चाहिए? सर 1.4 ग्राम को ज्यादा होना चाहिए.
Very good. That's the relationship. So anyway, you have to report this. Now again, we note down every time these red readings are noted down. Whenever you perform the test, this may be something which is indirectly noted as a difference in the logarithmic. Then you apply the correction depending upon what is the temperature. So higher temperature in the laboratory, higher value of the permeability than the actual value at 20 degrees Celsius. Similarly, if the temperature in the laboratory is like 10-12 degrees Celsius, then the reported results of the permeability may be lesser. So you have to apply a correction factor to bring it to the correct value at 20 degrees Celsius, which is the reference point. Is this point clear? Temperature के ज़्यादा होने से voids may be opening. Water flow can be assisted by the higher temperatures, और localized vaporization भी हो सकती है और दूसरे कई factors हो सकते हैं. लेकिन जब टेम्परेचर कम होगा तो फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से, श्रिंकेज की वजह से, इंटरनल श्रिंकेज की वजह से हो सकता है कि वाटर को रेजिस्टेंस ऑफर हो रही हो ज्यादा. इन दैट केस it is expected that, so just if I write it over here for you, क्या ख्याल है K at 15 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या रिलेशन होना चाहिए K at 25 डिग्री सेल्सियस के साथ? ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन होना चाहिए बीच में. Anyone? सर 25 डिग्री पे हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे कि परमेबिलिटी ज्यादा है. बीच में साइन बताएं क्या आएगा यहाँ पर. सर 25 ग्रेटर देन आ जाएगा हमारे पास और 15 लेस हो जाएगा. So 15 is less than 25. ऐसा ही है ना? Yes sir. Yes, that's right. So you have to make a table that should look like this, and you have to report results after applying the correction. If the temperature is mentioned, और correction के लिए again आपको same diagram use करना है, same table use करनी. Finally, you will be reporting the mean value of the corrected permeability. ये आपका final answer होगा. जी और कुछ, कोई किसी का क्वेश्चन हो अगर इससे रिलेटेड, क्योंकि मेरा ख्याल है कि सब कुछ तकरीबन कवर कर लिए. और फाइनली आपको अपने कमेंट्स देने हैं. कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आपने कैसे, क्या रिजल्ट्स आए आपके, करेक्शंस कौन सी अप्लाई की और क्यों अप्लाई की, और कोई एरर्स आए थे तो एरर्स डिस्क्राइब कर दें. दैट्स इट. एक चीज जो ध्यान में रखनी है, सॉरी मैं बताना आप लोगों को भूल गया, वो है आपकी वो जो मैं हमेशा ASTM करेक्शन की बात करता हूँ. स्टैंडर्ड जनरली गिव्स यू अ थंब रूल दैट these three values of permeability, they should not have a mutual difference of more than plus minus 5%. इसका मतलब ये है कि एक को दूसरे से जब कंपेयर किया जाए तो डिफरेंस कितना होना चाहिए मैक्सिमम? कोई बताएगा? सर 5% प्लस या माइनस 5% की रेंज में होना चाहिए. मसलन एक वैल्यू आपकी आती है परमिएबिलिटी की से 6.78, दूसरी वैल्यू को 6 पॉइंट अगर आती है 3, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा डाटा सेट? और चौथी वैल्यू आती है आपके पास 6.95, तो इनमें से कौन सी वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे वैसे? मिनिमम 3 टेस्ट आपने 6.3 को कर देंगे.
6.3 अपेरेंटली बहुत ज्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रही है। एक और टेस्ट करेंगे और अगर आपकी वैल्यू 6.87 आ जाती है तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। So you will discard only this and you will take all these three values. Does it make sense? ठीक है जी। यस सर। यस सर। बस ये इतनी सी इसमें टेक्निकलिटी थी। करेक्शन, दिस चेक और करेक्शन का लॉजिकल होना भी मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर करेक्शन लॉजिकल कब होगी। ठीक है। अगर आपका कोई और क्वेश्चन नहीं है तो देन आई थिंक दैट्स इट। सर हमने ये ये अब लैब्स की रिपोर्ट कब जमा करवानी होगी, कंसोलिडेशन और परमेबिलिटी की? अमर साहब इनको बता दीजिए कुछ इससे रिलेटेड। जी सर। When they should submit their laboratory reports? अब इन्होंने पिछली तो वो कर ली हुई हैं, अब सिर्फ कंसोलिडेशन और ये रह गई हैं। इनके 7th वीक में हमने वाइवा लेना है, क्या किस तरह करना है? कोई एग्जामिनेशन, कोई ना कोई इवैल्यूएशन का कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा लास्ट वीक में। तो क्विज ये कुछ इस तरह। वैसे तो प्रेफरेबल यही होगा कि अगर नेक्स्ट वीक तक कर लें तो फिर इनके क्विज तक मैं उम्मीद है चेक कर जाऊंगा, नहीं तो फिर ज्यादा से ज्यादा फिर यही नहीं, है दो कि जॉब्स हैं तो ये तो इनको नेक्स्ट वीक तक कर लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक में आप सबमिट करवाएं, 6th वीक है। और जी। उसके बाद हम ईद के बाद आपकी इवैल्यूएशन करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें हम किसी किस्म की मजीद चेकिंग वगैरह नहीं रखना चाहते। ठीक है। ओके सर। सर जो कंप्लीट मैनुअल भी सबमिट करवाना है वो कब करवाएंगे? वो वही यार नेक्स्ट वीक मुकम्मल करके बस दे देना, नेक्स्ट वीकेंड तक। नेक्स्ट वीकेंड तक इन ऑल रिगार्ड्स कंप्लीट करें अपना मैनुअल। जो जिन्होंने मैनुअल कंप्लीट करना, जिन्होंने ये दोनों जॉब्स ऐड करनी है वो ऐड करें, फाइनल रिपोर्ट बनाए और पीडीएफ में सबमिट करवा दें। सर यानी कि वो कंप्लीट रिपोर्ट सेंड करनी है आप सारी जॉब्स की? जी भाई, फ्राइडे इवनिंग जो है ना, नेक्स्ट फ्राइडे इवनिंग, ये वाला नहीं जो परसों आ रहा है, नेक्स्ट फ्राइडे इवनिंग तक अपनी तमाम जॉब्स को देखकर इन दो को उनके साथ मिला लें और एक रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव बनाकर हमें भेज दें। ठीक है। हमारे साहब ये दो खाली जॉब्स ही दे दें जिन लोगों ने पहले दी हुई है, या इकट्ठी करके दे दें बेहतर है। ये इकट्ठी करके ही दे दें। इकट्ठी रिपोर्ट दे दें तो ज्यादा बेहतर है, खास तौर पर जो जिनके लिए पॉसिबल है। जिनका कोई इशू होगा तो फिर वो अपने इशू को बताएंगे। इशू जेन्युइन हुआ तो एंटरटेन कर लेंगे हम लोग, अदरवाइज वरना ऐसे है कि फिर दोबारा एंड पे आके फिर भी इकट्ठी सारी भेजनी होगी, तो पहले ही इकट्ठी भेज दें जब सारा तैयार हो गया। बिल्कुल सही। आई एग्री विद दिस। ठीक है भाई, फिर उजैर ऑल गुड? ओके सर। सर एक क्वेश्चन। जी उमर पूछें क्वेश्चन पूछें। Sir, why we do not use constant head permeable test for fine grained soils? Actually, you cannot maintain those conditions in which you have a steady state flow. There is a significant flow through the sample cannot be achieved, and that's why we cannot perform the constant head permeability test. You have to wait for long hours for the drop of waters to come out of the sample. So the only better option, compatible option, is to use a falling head permeability test, whereby you use a standpipe instead of a large reservoir and all that. तो हमें करना होता है ये बहुत थोड़े हेड पर, क्योंकि हेड लॉस हम कम से कम करेंगे तो अंदर सॉइल पार्टिकल्स की मूवमेंट को लॉक किया जा सकता है। और परमिएबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि सॉइल पार्टिकल्स भी मूव करें और अंदर डिस्टर्बेंस हो सैंपल के। इफ इट इज हैपनिंग देन इट इज नॉट परमिएबिलिटी, इट इज सफ्यूजन और सम अदर फिनोमिना दैट शोज कि आपका सॉइल सैंपल अंदर से स्टेबल ही नहीं है। इसको इंटरनल इंस्टेबिलिटी कहा जाता है। तो पाइपिंग शाइपिंग फेलियर हो सकते हैं, दूसरे मसाइल हो सकते हैं, एंड दैट इज नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी हमने पहले भी स्टैब्लिश किया था कि जब आप V और I को प्लॉट करते हैं तो जहां तक लीनियर रिलेशनशिप उसका ऑब्जर्व होता है वो बहुत थोड़ी सी लेंथ होती है।
तो वहां तक जो कुछ भी मेजर करेंगे वो परमिएबिलिटी है। उसके बाद कंडक्टिविटी जरूर है, लेकिन वो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, Okay, sir. Thank you. यार ये देख वीडियो चला के बैठे। जी उमर, आप कुछ पूछ रहे थे। सॉरी, मैं आई लॉस्ट इंटरनेट इन द मीन टाइम। सर आपने आंसर कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, ऑल गुड नाउ। ठीक है जी, फिर उजैर हम इसको क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। सर अमार साहब, इज दिस ऑल राइट? शैल वी क्लोज? सर जी सर। स्टूडेंट्स कुछ कह रहे हैं कि जो है ना हम 2 जॉब सबमिट करवा दें। 2 जॉब्स? ये सर ये देखिए 2 जॉब्स करवा लें और जो मैनुअल है वो अभी ना रहने दें। यार, मैनुअल रहने कैसे दें? आप लोग को फाइनली देना तो है, और उस वक्त आपके पास बहुत ज्यादा बर्डन होगा जब आपको फाइनल सबमिशंस करनी है। तो एक ही दफा एक ही शॉट लगाएं, और दोनों जॉब्स तो कर ही चुके होंगे या कर लेंगे उसको, तो इकट्ठी करें पिछली जॉब्स के साथ और नहीं सर, वो बच्चे सिंपली पूछ रहे हैं कि जो मैनुअल कंप्लीट मैनुअल है वो लाजमी सबमिट करवाना है। हाँ, लाजमी सबमिट होता है यार वो, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके सर। सर मंडे तक कर लें फिर। मंडे तक यार कोशिश करें कि संडे तक सुबह तक कर दें, संडे 10 बजे तक कर दें, ठीक है? उसकी वजह ये है कि मंडे को अगर टाइम दिया तो मंडे का दिन भी जाएगा, और दूसरा ये कि हमारे साहब ने और भी काफी काम करने होते हैं, तो ये इवेलुएशन जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, संडे 10 बजे तक। और लेट सबमिशन जो है ना वो फिर दे विल कम विद पेनल्टी। इट शुड बी नोटेड। ओके, तो सर ये फिर सीआरबी जमा करवाएंगे सारे? ये आप सीआर को यानी सीआर इकट्ठे करेंगे सबसे, और सीआर ही एक पीडीएफ सॉरी एक जिप फाइल बनाकर, जिप फोल्डर बनाकर, और वो सबमिट करवा दें। कोशिश कीजिएगा कि उसमें लिस्ट लाजमी दें किस किस ने दी है। तो सर फिर मतलब 10 बजे तक आपको सेंड कर मतलब सर अमार को सेंड करनी है, या 10 बजे तक ये सबमिट करवाएंगे? 10 बजे तक आपने सेंड कर देनी है हमारे साहब को। यार जो देता जाए ना उसको उस फोल्डर में डालते जाए, और उसमें एक वर्ड फाइल रख लें अपने फोल्डर में, कि जिसमें आप जो देता जा रहा है ना आप उसको सिर्फ उसका बस रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते जाएं, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है, और जैसे ही आप 10 बजे तक आपके पास जो फाइल आ जाए वो, यानी 9:45 तक या 9:50 तक आ जाए, बस वो एक फाइनल जो भी आती है उन सबको जिप फोल्डर में डालें उस लिस्ट के साथ, और उसको थ्रू कर दें। ओके सर। चलें जी, ठीक है फिर, ऑल गुड। यस सर। यस सर। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, एंड विल मीट इंशाल्लाह अगेन। अल्लाह हाफिज।